So let us start our today's class of speaking. And today's topic is Makar Sankranti. And you have to speak upon this topic. Okay? Yes, come on, Preeti. Good evening, all of you. My name is Preeti Agrawal. Today, our topic is Makar Sankranti. Makar Sankranti is also one of the famous festival of India. सब लोग It ध्यान is से सुनो अब. हाँ. it is celebrated all over the country, हम्म. and people celebrate it grand grand way. And on this day, it is believed that to donate the things, if we have something extra, and we can donate to the poor, and we can help them. And this festival is celebrated because on this day it is believed that the sun enters in the Makar Rashi, and it is fixed to celebrate on 14th January every year. But last 2 or 3 years, it is celebrated for 2 days, for 14 on 14 January and 15 January also. Few people are celebrating it on 14 January, and some of the peoples are celebrating it on 15th January. Are celebrating नहीं, celebrate simple present tense use करो. Okay, sorry, sir. Celebrates it on 15 January also. So, but it is celebrated by whole the people. And it is celebrated in all the states. And on this day, the delicious foods are made in the houses, and sometimes women um, ministry 14 things. Um, 14 things to give the poor or their relatives, their in-laws, and many other things happens on this day. There are many things that we wish to we take the blessings of our elders, and wish to our elders, and we always respect our elders. And on this day we give more respect to our elders. And it's also believed that on this day til is the most important food on this day, so we make many dishes with til also. And people donate or give the jaggery and til to cow also on this day. And this festival is celebrated by that we fly kites on this day. People come get together on their roofs, and they bring many kites of different kinds for to fly on this day. And they come to their roofs, and many friends come their houses. Many relatives also come their houses to celebrate this festival. And people get together on this day, and they celebrate this festival by enjoying it, the food, by flying the kites. And in this way we celebrate this festival, and we also love this festival, and we also go to our friends on this day to celebrate this festival. That's it. बहुत बढ़िया बोला, वेरी गुड. अच्छा फ्लो आ गया अब तो प्रीति. Yes. कैसा लगता Yes, है? sir. ये सर अच्छा लगता है. अब अब तो तो 90% मतलब try to speak in Hindi. It happens with me because when I see the label of the student, then I try to speak in Hindi. But sometimes it goes with the flow that I am speaking in English only. यस, ये प्रैक्टिस से हो जाता है सारा. वो आप टंग पे आने लग जाती है लैंग्वेज. Yes, sir. वेरी गुड. यस आस्था कम. Yes, sir. Hello, everyone. My name is Astha from Ramban English Online Interactive Classes. Today, I am telling you about Makar Sankranti. Makar Sankranti is celebrated in January. Makar Sankranti is celebrated in the memory of बेटा God's मैंने son. आपको कल भी बार बार कह रहा हूँ मैं सेलिब्रेटेड. ये आपको आदत गंदी पड़ जाएगी आपको. Celebrate in the फिर memory of सेलिब्रेट God. बेटा, सेलिब्रेटेड पैसिव वॉइस बन रहा है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का. Celebrated in the memory of God's son. हाँ. When the God's son enters in the Makar Rashi. हाँ, आराम से बोलो, धीरे बोलो, लेकिन करेक्ट करके बोलने की कोशिश करो अब आप उसको, है ना.
Yes, sir. हाँ, This स्पीड तो आ जाएगी, this लेकिन अगर एक बार गलत की आदत पड़ गई ना, वो ठीक होना मुश्किल हो जाएगा। फिर बोलो। this festival is dedicated on Hindus, डेडिकेटेड, थर्ड फॉर्म लाओ आप। dedicated on Hindu religions. टू, डेडिकेटेड टू हिंदू रिलीजन, ध्यान रखो जो मैं जो करेक्शन करवा रहा हूँ। Okay, sir. On this day, हम्म, we donate many things to poor people. हाँ We make many types of food in our houses, हाँ, वेरी गुड। and we also make many types of sweets on हम्म this day. हम्म Til ke laddu is the most important sweet for हम्म, Makar Sankranti. वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छा। All people fly it's on their roofs on this day. हाँ, They also all people competitions on this day of flying kites. वेरी गुड। ऐसे धीरे धीरे बोलोगे ना, स्पीड तो अपने आप आ जाएगी। अच्छा बोलोगे। हाँ, क्या हुआ, आज आपका नेट इश्यू हो रहा है? we we make and eat many types of sweets on this day, and we gifts to each other and fly kites together. वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला। हाँ, We also give gifts to each other, and we enjoy this festival with so we enjoy this festival very much. वेरी गुड। हाँ, Sir, that's it. बहुत बढ़िया। थोड़ा सा ध्यान से बोलेगी ना तो करेक्ट होने लग जाएगा फिर। वेरी गुड। यस विनय मैडम। Good evening, everyone. Okay, sir. हाँ, Today I'm going to tell you about Makar Sankranti. Makar Sankranti is a Hindu festival which is celebrated on 14th January every year, and this is the festival. On this day, sun enter into Capricorn zodiac sign. वेरी And, गुड। in this festival, we worship the sun god and take a holy bath in the river Ganga. And it is believed that taking a holy bath dip in a river Ganga on Makar Sankranti, it is washes all our sin. And on this day, people give donate lots of things to the poor people. Not only the poor people, other people also. It is not compulsory. You have to give your donate things to poor only. You can give anyone. It is a donation only, and it is considered a ritual that on this day uh, till till is roasted on this day. It is ritual, and child enjoy the day by flying the kite, and on day people make til ke laddu and barfi and so many sweet dishes are made on this festival. And khichdi is made on this festival or donate in this festival. And it is a festival. It is celebrated all over the India in different names. And children fly the kite, and young people also flying the kite on this festival, and it is celebrated all over the India by different names. People decorate their house with rangoli and flowers, and people go to temple. There is a one temple in Vrindavan which is open only on this day for the once in a year. That is called
तेली खंबे का मंदिर, and people comes Come. far. Hmm. People come different From state and far हाँ from लगाओ from हाँ from different places to visit that temple. And on this day, female donate सुहाग, मतलब जो थोड़ी रिचुअल जो थिंग्स टू द मैरिड females. And some worship is done on this day, like kahani, and some pujas done on this day. And the main thing is done, that is donation. It is the festival of donation and enjoy and fly kites. And that's it, sir. Okay. मैडम थोड़ी सी आवाज का करो ना आप कुछ अपना. आवाज अभी कम आ रही थी सर? कम नहीं, मतलब एकदम क्लियर नहीं आती है आपका ऑडियो ना, इतना क्लियर नहीं आता. अभी जैसे आपने सुना था ना प्रीतिका अच्छा, आस्था का, वो क्लियर नहीं आता आपका वॉइस. ओके. मैं जब आपसे बात करती हूँ तभी भी क्लियर नहीं आता है, सिर्फ बोलती हूँ उस समय क्लियर नहीं आता है. अभी जैसे आप बात कर रहे हो तो क्लियर नहीं आ रहा है, ऐसे ही आती है मतलब. नहीं, मैं इसलिए कह रही थी कि मेरी पिच की वजह से कम आ रहा है. नहीं, पिच की वजह से नहीं आ रहा, फोन में प्रॉब्लम हो रही है. हाँ कुछ ऐसा लग रहा है. फोन चेंज करके देखो अगर आपके पास दूसरा है तो एक बार. ठीक है, चलो ठीक है, मैं देखती हूँ. हाँ एक बार आप थोड़ा सा करो इसको, है ना. जी, बाकी तो ठीक है, अब आपका कोई ऐसी दिक्कत नहीं. अब तो आपका हेजिटेशन तो मुझे तो नजर आ नहीं रहा. नहीं सर, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी थोड़ा कॉन्फिडेंस कभी तो हर चीज में होता है, वो तो कोई बात नहीं है ना. कभी तो हर चीज में चलता है. बाकी ठीक आ रहा है अब तो आपका, अब तो ऐसी कोई बात नहीं है ना. चलो ओके मैडम. दृश्य. Hello everyone, Drsha Agrawal. Our today's topic यार is प्रीति की आवाज तो सही आती है, तुम्हारी आवाज में क्या हो जाता है ये? सर मैं थोड़ा लो बोलता हूँ, लो वॉल्यूम में. नहीं तो थोड़ा सा पास में ले लो ना माइक को. हाँ ऐसा है ना सर, मेरी पिच जो है ना वो स्लो है, मेरी भी आवाज स्लो है. पिच का मतलब नहीं है मैडम, यहाँ पे पिच वाली बात नहीं है. यहाँ पे पिच वाली बात, बोल स्लो रही हूँ या मेरे फोन में प्रॉब्लम हो रही है? आपके फोन में मुझे प्रॉब्लम लग रही है, या पिच वाली बात नहीं है इसकी. थोड़ा सा दृश्य देखो, आप बोलो जरा दृश्य एक बार. Hello everyone, Drsha Agrawal. Our today's topic is Makar Sankranti. It is celebrated because sun enters into the Makar zodiac. हाँ. It is Makar Sankranti is celebrated in the month of January on 14th August or on 14th January or 15th January. Before this festival, market is filled with markets are filled with till and kites. And before few days of this festival, til ke laddu are made in the houses. And on this day we wear new clothes, and early in the morning we go at the terrace and fly kites. And we fly kites till late evening. हाँ ठीक है, कोई बात नहीं. It is and at night we flew away lanterns. Fly away. And fly away lanterns. It is sad to be auspicious that if we donate anything to anyone, it is being auspicious. And eating til ki laddu are also auspicious. This festival is very important. It is celebrated all over the country. Many people like it. This festival is that's it.
ओके, ठीक है, ठीक है, सही आ रहा है तुम्हारा भी, कोई दिक्कत नहीं है, बस कोशिश करते रहो। यस हर्षित। Yes, sir. Hello everyone. My name is Harshit and I am the student of B8 Ramban Online Interactive Classes. Today's our topic is Makar Sankranti. This festival is celebrated in the month of January on 14th January. The story of this festival is related with the sun. Our ancestor said that day sun enters into the Makar Rashi. Very good. हाँ. That day children fly kites on their roof and their mothers make the sweet from the till. Very good. बहुत बढ़िया. That day people sing song also on their roof. The children are so excited that they go on their roof before the sun rises and they came down from their roofs after the sun set. And that day some children that doesn't eat food in the excitement don't eat food in the excitement of flying kites. Very good, बहुत बढ़िया. हाँ, अब तो फ्लो आने लग गया सब लोगों का. हाँ बोलो. That day some children go to temples also. Children's नहीं, children. Some children go to temple for worshipping the god sun. That day some children meet with their friends and with their relatives. बहुत बढ़िया, शाबाश. थॉट्स आने लग गए अब आप लोगों के बिल्कुल क्लियरली. हाँ. That day people wear new clothes. And they celebrate it with joy and happiness. That's all, sir. Very good. छोटा बोला लेकिन अच्छा बोला. आप फ्लो आ रहा है बराबर. अब मन की जो भी थॉट्स हैं वो निकल करके आ रहे हैं आप लोगों के. बस यही चाहिए मेन बात. तो सिस्टम तो बन चुका है आपके माइंड में, नो डाउट. ठीक है ना. अभी तक तो जिन लोगों को मैंने बुलवाया है हो चुका है. रीडिंग चालू करूंगा बस मैं अब, है ना. नहीं तो नेक्स्ट वीक में मंडे से तो रीडिंग चालू कर ही दूंगा मैं. आपकी रीडिंग से और फ्लो आएगा आप लोगों का. समझ गए आप. रीडिंग के लिए मैं आपको भिजवाऊंगा एक पीडीएफ. अभी 1-2 दिन में मैं सारा सिस्टम बैठ जाएगा मेरा, है ना. ओके. यस कम ऑन श्री. Hello everyone, my name is Ritika Sharma. Today I tell you about Makar Sankranti. India is the country of festivals. There are so many festivals celebrated like Holi, Diwali, Rakhi, Eid, Christmas, etc. And Makar Sankranti is also one of them. Very good. बहुत बढ़िया बेटा. हाँ. It is celebrated in January, and on this day sun comes. हाँ बोलो. Sun comes in Makar Rashi. बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं है. हाँ बोलो आप. हाँ. And Uttarayan as well. हाँ बहुत बढ़िया. हाँ. On this day people are very happy. And before this festival people purchase kites and manja etc. कोई बात नहीं, बोल बेटा बोल. And on this day they fly it and enjoy so much. On this day people make different type of food at home. And most of people bring sweets on this day. And till laddu is famous sweet of this festival. Very good, बहुत बढ़िया. हाँ. We also celebrate this festival, and early in the morning we get up and we take bath. And after take bath we go to terrace and we fly kites and we eat till laddu. And and we enjoy so much. And parents called their children
their children are not don't like to come uh, come Come down. in come down. And when we cut any kite we 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 shoutly we shout we Shout. We shout. Shout. We shout Loudly. shoutly. Beta, we shout loudly. We Shout. we shout. Shout नहीं, shout. We shout loudly. हाँ. हाँ. I like that festival so much. That's बहुत बढ़िया, वेरी गुड. हो गया काम आप लोगों का, इसमें तो कोई डाउट नहीं है. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. तुम्हारी रिकॉर्डिंग भी बहुत अच्छी आती है. जो मन में आपकी बात है उसको ट्रांसलेट करने लग गए हो, बोलने लग गए हो. खत्म प्रॉब्लम आप लोगों की. विद इन 3 months, 3 महीने होंगे अभी अपने को. Within 3 months you have done it. Almost all of you. Yes, come on. Ashfaq. Yes. Hello everyone, my name is Ashfaq Khan and I am the student of Ramban English online tutorial classes. Today's our topic is about Makar Sankranti. Now I tell you. There are many festivals in India. Makar Sankranti is also famous festival in all India. We call it festival of kites because we fly kites on that day. मोना ध्यान से सुनना बेटा. हाँ. All people say that the sun enter in Makar Rashi on that day. Very good. This festival is celebrated in 14 or 15 January. On that it's celebrated all country. People say we should donate our things to poor. On that day, people comes their houses. Come. टेंस का ध्यान रखो. अशफाक थोड़ा सा बाकी है बस. हाँ. Come on their houses roofs in early in the morning and women's make delicious food in their houses. Sweets are also make on that day. Made. हाँ. टेंस का ध्यान रखो, थोड़ा वर्ब फॉर्म का ध्यान रखो. हाँ बोलो. On that day, this festival's famous sweet is til ke laddu. Very good, बहुत बढ़िया. हाँ. So we also make it. It is very tasty sweet. It made by til ke laddu and good. It is made. वर्ब फॉर्म का ध्यान रखो. Is made by til ke laddu and good. We fly kites on all day. All caste person celebrate it. So this is festival of all castes. We fly. Then we fly lamps in night. On that day we watch many kites in sky. On that day shops are decorated with kites. बहुत बढ़िया. देखो अपने आप आने लग गए शब्द आप लोगों के. हाँ. Before it we go to market and we purchase many kites, manja, etc. Any things. We many person.
This festival has many names, Very good. like Uttarayan. सर दुष्परिणाम को क्या बोलते हैं? दुष्परिणाम, बैड रिजल्ट्स, consequences. हाँ, बैड रिजल्ट बोल दो आप, तो बुरे परिणाम होते हैं. This festival has also bad result, like सर बजाते हैं जिसके बोलते हैं, गाना बजाते हैं, प्ले. Because on that day people play songs at high volume, so we get noise pollution. And why Chinese manja work? No. People work. Birds. People use Chinese manja, which cuts, which kills a lot of birds in the sky. Lot of birds in the sky. So we should not play music at high volume on that day, and we should not use Chinese manja on that day. So that's it. वेरी गुड. अपने आप आने लगी हैं चीजें, हम अपने आप प्रीपोजिशन को यूज करने लग गए, अपने आप सेंटेंसेस बनने लग गए, अपने आप आज है आप हैज और हैव का यूज करने लग गए. दिस इज ऑल ड्यू टू प्रैक्टिस. ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना? यस सर. यस, कम ऑन मोना. Hello everyone, my name is Mona Meena. Today my topic is Makar Sankranti. Makar Sankranti is also an important festival. It is celebrated in 14 January. on बेटा डेट जब आता है ना तो ऑन लगाते हैं. बोल. It is festival of kites. This day all people and before this day children go to terrace and fly kites, and people all people made तिल के लड्डू. नहीं, मेड क्यों बेटा? मेक आएगा ना प्रेजेंट टेंस. हाँ, make तिल के लड्डू, and some lady donate. हाँ बोल. डोनेट different things. We also give this day. आवाज को क्या हो गया? अच्छा बोल रही है. जब अच्छा बोलते हो, जब आवाज कट जाती है तो फिर बड़ा दुख होता है. It is in memory of sun god. We fly many birds. क्या हुआ? ओके बेटा, बोलते तो आप अच्छे हो, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है आपको? आप प्रैक्टिस कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये बताओ. सर कर रही हूँ ना. राइटिंग कर रहे हो, रिकॉर्डिंग कर रहे हो क्या? सर रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही, राइटिंग तो कर रही हूँ. रिकॉर्डिंग क्यों नहीं हो पा रही? क्या कारण है? फोन नहीं रहता? सर आप भैया रहते हैं, अब से होने लग जाएगी. बेटा ये थोड़ा बहुत जो कमी है ना, ये खत्म हो जाएगी. ये सेंटेंस आप बिल्कुल सही बना रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. थोड़ी सी स्पीड और आ जाए तो काम हो जाए बस आपका. समझ गए ना? ग्रामेटिकल सही सेंटेंसेस बना रहे हो आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, और कंफ्यूज मत हुआ करो थोड़ा सा. 4 लोग 4 तरह की बातें करेंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आपके साथ में. ठीक है ना? हाँ,
जब अपन बोलते हैं तो Yes, sir. बेसिक ग्रामर को ध्यान रखा जाता है। एक एक पॉइंट का अगर अपन ध्यान रखेंगे ना ग्रामर में, तो अपन कभी बोल ही नहीं पाएंगे। ये बात बता दूं मैं आपको बात। बहुत ज्यादा डीपली ग्रामर में घुस जाओगे ना तो आप बोल ही नहीं पाओगे, फिर आप बार बार जगह जगह अटक जाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप बस ये ध्यान है, मेरा कहने का मतलब ये है बस। यस वंश, बाकी बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। वंश। Hello friends, my name is Vansh Sharma from B8. Today's topic is Makar Sankranti. India is country of festivals. There are many festivals celebrated in India like Holi, Diwali, Makar Sankranti, etc. We are very happy in these festivals. On this festival, in नहीं on this festival. थोड़ा सा ध्यान रखो बस। हाँ। Okay sir. In this day मैंने कहा दिन के लिए अपन ऑन लगाते हैं, बार बार बोल रहा हूँ ना। On this day we are fly kites. आर क्यों लगा रहे हो? We fly kites. We fly kites. Many people purchase many kites, charkes, manjas, etc. Many people donate many things like kites, manjas, poor people. Many people donate many things like kites, charkas, etc. We are very happy and poor person very happy. Are very happy. Poor person are also very happy. हाँ. Are also very happy. Many people fly kite at 5 a.m. From 5 a.m. From 5 a.m. Many people start flying kite from 5 a.m. कोई बात नहीं, ये तो आ जाएगा धीरे धीरे। बोलो आप। Many people made delicious foods. Make इसका ध्यान रखो। हाँ। Make delicious foods in this day. On this day. On this day. हाँ. And we are eat delicious food. We eat हाँ, थोड़ा ध्यान से। delicious foods. हाँ. सर इस दुष्परिणाम को क्या बोलते हैं? दुष्परिणाम को बैड रिजल्ट। बैड रिजल्ट। On this day very bad results come like killing birds, pupils kill. We are not use Chinese manjas. We should not use Chinese manja. We should not Chinese manjas. Should not use Chinese manja. Because this सर इस मांझे से क्या इंग्लिश क्या होगी? आप पूरा सेंटेंस बोलो। इस मांझे से पक्षी मर जाते हैं। तो many people are killed by this manja. Many people are killed by this manjas. That's it. Okay. अभी तुम्हारे को जरूरत है, तुम्हारे को और मोना को अभी प्रैक्टिस की जरूरत है। अभी टंग पे नहीं आ पा रही है, ये थॉट्स भी कम है, और वो अभी कुछ करता हूँ मैं। तुम्हारा सेल्फ प्रैक्टिस दोबारा से चालू करनी पड़ेगी, चेक करवाने का। अभी 1-2 दिन रुको, मैं आपको टाइम बताऊंगा, उस पे चालू करना आप। यस अंजलि। यस सर। हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि मीना। टुडे आई एम टेलिंग अबाउट मकर संक्रांति। देयर आर मेनी फेस्टिवल्स सेलिब्रेट इन इंडिया। Celebrated in India. Makar Sankranti is one of them. Important festival of Hindus. It is important festival of Hindus. It is important festival of Hindus. It is celebrated every year. 14 January. On 14 January. 14 January. On this day, sun enter Makar Rashi, the Makar Rashi. In Makar Rashi, हाँ. In Makar Rashi. Relative and friends come in our home. On this day. On this day, people donate poor many things. People donate many things to poor.
या अमंग पुअर? हाँ बोलो। Okay, sir. हम्म Many people purchase kites and manja हम्म and sweets. हम्म We on this day we make dal bati churma. हम्म People make til ke laddu. हम्म It is most important. हम्म Children enjoy this day flying kites and eating sweets. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ Makar Sankranti is the festival which is enjoyed by everyone. That's it, sir. बहुत बढ़िया, अपने आप आने लग रही है चीजें, अभी प्रैक्टिस और चाहिए तुम्हारे को थोड़ी सी। सर मेरे मुंह में छाले हो रहे थे, मैं बोल नहीं पा रहा था। कोई बात नहीं है, ठीक है, अच्छा बोला, लेकिन आपके सेंटेंसेस प्रॉपरली आ रहे हैं, ठीक है ना? ओके, थैंक यू वेरी मच। कोई रह तो नहीं गया? चलिए।